Good evening, guys. Welcome to Brookesa's Maths Academy. बच्चा लोग, in our previous three videos, we discussed sum number 1 onwards to 36. In this particular fourth part, we are going to discuss circle sums from 37th onwards, 37 to 48. So let's get started. So two very interesting sums based on circles and similarity comes into the picture. Let's get started. So they are given the value of area of triangle APB as 24 centimeters square. They are given the value of AB to be 8 centimeter and they are given the value of CD to be 5 centimeter. Fine, beta. We need to find area of triangle DPC. So our focus will be to prove triangle APB and DPC to be similar. See how? To prove two triangles to be similar, as you must have learned in similarity chapters, we need two angles to be equal. So one is vertically opposite angles, can you observe? And second is angle in same segments. And second is angle in same segments. Can you see? बच्चा लोग महिंद्रा फॉर्मेशन दिख रहा है आपको? A, B, P and P, C, D बेटा. ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है बेटा. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. बराबर है बेटा? समझ में आया? Why these two angles became equal? चलो, great. Now therefore, I can say triangle similar to triangle. Let us name it out properly. P and P equal, perfect. Then B and C equal, perfect. बाकी क्या रहा? A and D. So two triangles similar by A test. Vertically opposite angles and angle in same segments. Therefore, I can say area of triangle PBA upon area of triangle PCD. As we all know, when two triangles are similar, the ratio of areas is equals to ratio of their corresponding side square beta will be equals to AB upon CD the whole square. AB 8 upon 5 the whole square 64 by 25. So the ratio, ठीक है बेटा? Area of triangle PBA दिया है 24, perfect, upon area of triangle PCD is equals to 64 by 25 बेटा. Cross multiply करो, so area of triangle PCD will be 24 into 25 upon 64 बेटा. 8 3s are 8 8s are 75 by 8. Perfect बेटा बच्चा लोग. Understood everyone? So 93 by 8 centimeter square is your answer. Perfect मेरा बच्चा. Understood? Now, in this triangle, they are given XPQ is a bisector of this angle, entire angle X, YXZ. ठीक है? ये bisector है, मतलब ये दोनों angle equal है. Agreed? Now, here the main task is to identify which two triangles you will prove similar. XY, okay. XQ, okay. XP and XZ. ठीक है? So, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, so I'll definitely take triangle XYQ and triangle PXZ. बराबर मेरा दिख रहा है लोग, ठीक है? सो बाइसेक्टर की वजह से ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है. नाउ वी हैव टू फोकस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द सेकंड एंगल. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इफ दिस इज अ सेगमेंट, दिस एंगल XQY and YZX becomes equal, एंगल इन सेम सेगमेंट. ठीक है मेरे बच्चे लोग? जो मुझे सिमिलरिटी के लिए दो एंगल जो है वो मुझे मिल गए. यस, मुझे मिल गए. देयरफॉर आई कैन से ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल. x is equals to x, q is equals to z and y is equals to p. Therefore I can say first two terms xq upon xz is equals to xy upon xp. Just cross multiply and you get it. No, we'll do alternando. Interchange. Therefore, xp upon xz is equals to xy upon xq. Alternando क्या किया बेटा? Alternando. Therefore, final answer लिख दो. xp upon xz is equals to xy is to xq. यही प्रूफ करना था, हो गया अपना काम. अंडरस्टूड मेरे बच्चे लोग? हाउ टू सॉल्व, अंडरस्टूड मेरा बच्चा लोग? पक्का वाला? होप सो एवरीवन गॉट इट बेटा.
सर्कल्स एंड सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट रेगुलरली आस्क होते रहते हैं, मतलब दे हैव बीन आस्क्ड वेरी ऑफन इन एग्जाम्स, सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, we'll do more sums based on this. Now pause this video, try to solve both the sums on your own. बेटा एंगल इन सेम सेगमेंट बहुत अच्छे से समझो. हाँ, महिंद्रा फॉर्मेशंस. लेट अस डू सम नंबर 39 40. B A B C D. First prove angle PAD is equals to angle PCB, and second prove करो PA into PB PC into PD. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट अस राइट आउट. देखते हैं. फर्स्ट बोला है PAD मतलब दिस एंगल and PCB this angle to be equal. Okay, बेटा can I say with your permission with angle in the same segment, दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो. हाँ बेटा, can I say angle BAD x is equals to angle BCD x. The first step, angle BAD is equals to angle BCD is equals to x because angle in same segments are equal. देखो ध्यान से, मैं तुम लोग के लिए रफ डायग्राम बना रहा हूँ. मेरा BAD ऐसा दिख रहा है, मेरा BCD ऐसा दिख रहा है. परफेक्ट मेरा बच्चा, इसको मैंने x दिया. तो बेटा लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, बिकॉज एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 180 माइनस एक्स. और अगेन विद लीनियर पेयर एंगल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स. देयरफॉर आई प्रूव एंगल PAD is equals to angle PCB is equals to 180 minus x. Understood मेरा बच्चा लोग? हाँ. Now we want PA into PB, PC into PD. So I'll take this to triangle only बेटा. देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा. I'm doing PCB बेटा. PCB and PAD. PAD PCB. ये 180 माइनस एक्स है, अभी जस्ट प्रूव किया. ये भी 180 माइनस एक्स है, वो भी प्रूव किया. ओके, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द सेकंड ट्रायंगल. बेटा सेकंड ट्रायंगल में फोकस करते हैं. देखो किधर बेटा क्लियर कट ये दिख रहा है, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. कैन यू सी ABC is equals to ADC. Angle ABC is equals to angle ADC. Angle in same segments. Angle in same segments are equal. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया बेटा. ओके, अपना काम हो गया. चलो नेमिंग करते हैं. सो ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल. ओके, सो C and A, B and D, P and P. Otherwise you could have gotten P is a common angle also. ये भी बन सकता था, चलेगा, कोई भी चलेगा. देखो फर्स्ट टू टर्म CB अपॉन AD, PB upon PD, PC upon PA. Let us take these two part, cross multiply. So PA into PB is equals to PC into PD. Hence 2. You could have gone with P is a common angle also. That also works with me. Okay. सेम सेगमेंट स्ट्राइक हुआ, बहुत अच्छी बात है. नहीं हुआ तो इट्स ओके. हाँ बेटा, अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व बेटा. गाइस एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, आपको जो डेटा पॉइंट दिया है उसके हिसाब से यू हैव टू फ्रेम योर आंसर. ओके बेटा, फर्स्ट थ्री सम्स आर यू क्लियर? सिमिलरिटीज के ऊपर थे. नाउ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड.
चलो लेट अस डू दिस सम्स बेटा. चलो साथ में करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? व्हेन all four vertices of a quadrilateral lies on the circumference cyclic quadrilateral. तो ये 130 तो उसके सामने 50. Understood बेटा? Now AB is a diameter, opposite angles are supplementary. ठीक है? If AB is a diameter, this angle has to be 90 degrees. So this angle becomes 180 minus 90 plus 50. So 180 minus 140. कितना हुआ? 40. So DAB 50 degrees, DBA 40 degrees. Very easy sum to explain, very easy. But this is 90 degrees, angle in a semicircle is 90 degrees. Cyclic coordinate 110, okay? So 90 plus 70, 160, so this will become 20. And 110 plus 30, 140, so this becomes 40. So ABD is 20 degrees. And BDC is 40 degrees. Very easy sum beta. Opposite angles are supplementary and angle in a semicircle is 90 degrees. Beta BD is a diameter given है. BD is a diameter given है. So this angle becomes 90 degrees. 90 plus 48, 138. So this becomes 130 minus 138 which is 42 degrees. Which is 42 degrees. Are you with me beta? ये 42 ऐसे ये भी 42 हो जाएगा. Angle in same segments are equal. सामने वाला हो जाएगा 180 minus 42. कितना होता है? 138 degrees. Opposite angle is supplementary बेटा. ये cyclic quadrilateral. Can you see? You could have taken ABEC or BDCE. Both works. ठीक है? Upwards. ये 42, ये 42 because angle in same segments are equal. If you observe carefully, it's like proper Mahindra formation. Okay? This is very interesting sum. No values are given. And they have asked us to find the value of ACD and AED. AED beta. Sorry, BED. Okay, we have to find the value of ACD and BED. Fine? Chalo. What I'm going to do, I'm just going to draw one line AE. ठीक है बेटा? Perfect beta. This is diameter. So can I say when I join AE beta? Okay, my entire angle BED get breaks into two parts. ठीक है? Listen, ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ. ACD plus, but this BED get divided into two parts. One part is AEB and second part is AED. So can I write AED plus AEB? So what I did, I break BED into two parts. One is AEB and second is AED. Are you with me beta? Now, if this is diameter, so angle in a semicircle is 90 degrees plus. Beta, can you observe? This is nothing but a cyclic quadrilateral. Can you see this is nothing but a cyclic quadrilateral? This is nothing but a cyclic quadrilateral. Four-sided figure. So angle ACD plus angle AED का addition has to be 180. So 180 plus 90 which is 270 degrees. Therefore value of ACD plus entire angle BED is 270 degrees. ये कंस्ट्रक्शन करना मत भूलना बस. This is very 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 nice sum बेटा. Please go through this sum बेटा. All four sums अच्छे से go through करो बेटा. ध्यान से देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा. आई एंड बीईडी को मैंने ब्रेक किया दो पार्ट में. एक है AED, एक है AED और दूसरा है AEB. नाउ ACD plus AED makes 180 because cyclic quadrilateral. AEB angle in a semicircle makes 90 degrees. ठीक है? Therefore दोनों मिला के 270 हो गया. Now pause this video. Please go through the all four sums. Very interesting sums we did beta. These are really really good sums beta. What do you want?
AB is equals to BC given. Find ECD. We have to find this angle. Okay, let's see. A, P, Q, R, B. This is Y. This is 45. This is X. Given X is 2. Chalo, let us do it. Chalo, both the sums are very nice, sir. Let us find it out. But these two sides are equal, मेरा बच्चा लोग. Okay, so this is 30, this is 30. Will you agree? 30 plus 70 कितना हुआ बेटा? 100. तो ये कितना हो गया? 80. लीनियर पैर से ये कितना हो गया? 100. आर यू विथ मी? अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, इफ दिस इज सेगमेंट, कैन आई से सी ए बी इज इक्वल टू सी डी बी, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल बेटा. विल यू एग्री? सी डी बी ऐसा है, सी ए बी ऐसा है. Okay, now 30 plus 100, 130. So this becomes 180 minus 130, which is 50. Are you with me बेटा? समझ में आया बेटा? आपको पक्का वाला समझ में आया? ग्रेट. बेटा ये 45 तो ये भी 45. नाउ अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सी आई विल शो इट टू यू, तुम लोग को याद आ जाए 9th स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टी, मतलब लोअर ग्रेड का प्रॉपर्टी. Exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. So this becomes, P becomes x plus 45. Similarly, if you observe this triangle, ये 45 है, ये y है, तो this becomes y plus 45 बेटा. This becomes y plus 45. We all know opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary बेटा. ये cyclic quadrilateral है, can I name it PQRS as cyclic quadrilateral? So x plus 45 plus y plus 45 equals to 180. Therefore x plus y plus 90 equals to 180. Therefore x plus y is 90. Now we know x is nothing but 2y. So 2y plus y is 90. 3y is 90. Y is 30. Y is 30, so x is 2y, which is 60 degrees. Hope so आपको समझ में आया हो बेटा. Very nice sum. Beautiful sum. Both sums were very nice. Excellent sums. ठीक है बेटा. So please keep solving such kind of sums बेटा. Pause this video and try to solve these sums on your own here beta. Try to solve both the sums on your own guys.
find ADE. Given BAC is 40 degrees. AB and AC are equal. Given AB and AC are equal. ठीक है, very easy. AB and AC are equal. चल. Find ADE. Okay. चल. Let us start with that. Last three sums of this session. ठीक है. So I'm dividing all the parts into 12 sums for your easy and for your convenience, so that you can focus and do it. Each video will be around 30 to 40 minutes. Okay, so you can just go through all 12 sums very diligently. ठीक है, चलो let's start. बेटा, angle in a semicircle is 90 degrees. So with your permission, can I say this angle is 90 degrees? So the remaining angle become 20 degrees. Will you agree बेटा? हाँ बच्चा, पक्का वाला. ये पूरा 118 है, उसमें से ये 90 डिग्रीज बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री बिकॉज ये डायमीटर है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. तो रिमेनिंग एंगल बिकम 28. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली मेरा बच्चा, DEC, कैन यू सी DEC बेटा, and DAC are the angle in same segments, 28. Now since this is also diameter, so B becomes 90 degrees, and since these two sides are equal, so 45 बराबर है बेटा. x plus 90 is equals to 180 करोगे, x plus 90 equals to 180 करोगे, so you get x is 45. Base angles are equal. So अभी क्या क्या पूछा है आपने को? BAD पूछा है, BAD पूछा है पूरा. 45 plus 28 कितना होता है बेटा? 73 डिग्रीज. और DEC पूछा था, DEC तो अपने को पता है 28 डिग्रीज है. समझ में आया बेटा? कर लो. ग्रेट. नाउ इन दिस ट्राइंगल देखो बेटा, ये 130 दिया गया है, ये 130 दिया गया था. इफ यू ऑब्जर्व दिस इज नथिंग बट अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, सिंपल साइक्लिक क्वाड्रेटर बेटा. हाँ, तो ये कितना है? 50 बेटा. ठीक है, परफेक्ट बेटा. चलो, now they have said these two chords are equal, BC and BE are chord equal. So I'll put these two triangles. Which two triangles? Triangle OCB and triangle OEB to be congruent. I'll put triangle OCB and triangle OEB to be congruent. How बेटा? देखो, in triangle OCB and triangle OEB, first OC is equals to OE. Radii ना बेटा? Radii of same circle equal. Second, BC is equals to BE, given है, मैंने नहीं बोला, given है. एंड थर्ड, OB इक्वल्स टू OB, कॉमन साइड है. Therefore triangle OCB congruent to triangle OEB by SSS test, and therefore this becomes 50 by CBCT. Therefore angle OBC is equals to angle OBE is equals to 50 degrees. And therefore angle CBE is nothing but 50 plus 50 which is 100. ध्यान से देखो, पूरा CBE कितना होगा? 50 plus 50 100 हो जाएगा. So easy sir, manageable था. Now if this is 40 मेरा बच्चा, this is 40, this is 40 and AB and EC are equal, so can I say the base angles are equal? So x plus 40 equals to 180. 2x equals to 140. X is 70 बेटा. तो ये 70 degrees, ये भी 70 degrees. Now we have to find x. See, if you observe carefully, if you know this property very well, you can directly apply. It says that exterior angle of a cyclic quadrilateral equals to interior opposite. तो ये directly 70 लिख सकते हो आप. ठीक है? Exterior angle of a cyclic quadrilateral equals to interior opposite. But someone says, sir, I don't know. तो मैं बोला ठीक है, ये 70 है तो ये ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री, तो ये 110 हो जाएगा, लीनियर पेयर से 70 हो जाएगा. 70 लिखे आना है बस, और कुछ नहीं. What was the property बेटा? Exterior angle of a cyclic quadrilateral equals to interior opposite angles. Exterior angle of a cyclic quadrilateral equals to interior opposite angles. Hope so you have understood this particular sum. Hope so you have understood this particular session of 12 sums बेटा. Okay. Please make sure you go through all parts very thoroughly, part by part, sum by sum करो. ठीक है?
more you are focused, more you are solving on your own, more confident you become. ठीक है, videos are only for reference, you have to solve on your own. Thank you so much for listening us out. Have a great day.